Welcome to this lecture on Algebra of Integrable Functions by Dr. Rajesh Singh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Prince. Good afternoon, Anurag. So I gave you a lemma to prove, right? So anyone tried it? No, sir. Okay, no issues. So we will try. We will do it in the class now. Okay. So simple lemmas hai. We will just be using infimum and supremum property, nothing else. Basic lemmas hai. So this screen is visible to everyone. Yes, sir. So this is the lemma that we are going to prove now. Okay, so we have already seen its statement. So f is any bounded function defined on closed interval AB, and k is a bound of f. Mod fx is less than or equal to k for all x belonging to AB. So if we pick any subset of the closed interval AB, then for any subset S, the supremum of the function f over S minus infimum of the function f over S is equal to supremum of fx minus fy for all xy belonging to S. Okay, so this is the first that we are going to prove. So let us start. So to show MFS minus MFS is equal to supremum of fx minus fy for all xy belonging to S, right? So one way is obvious. This is always smaller than the difference between any two images, right? ये क्यों होगा ऐसा? For any xy belonging to S, fx minus fy is less than or equal to MFS minus MFS. Why is it so? Can anyone explain this? For any xy in this set. सर क्योंकि कैपिटल Yes. MFS ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉल MFS सबसे लीस्ट वैल्यू है. Yes. इसको we can write it like this. For any xy belonging to S, MFS infimum of f over S is less than or equal to fx fy, right? इन दोनों में से कौन सा बड़ा ये पता नहीं हमें. And this is less than or equal to MFS, right? Yes. So difference between these two will be smaller than the difference between these two. So this implies fx minus fy is less than or equal to MFS minus MFS. Is it clear? देखो number line पे देखो, then you will easily see. ठीक है? So here is MFS. ठीक है? Here is capital MFS. fx कहीं suppose यहाँ पे है, fy को मान लो बड़ा है fx से, या fx को ही बड़ा मान लो भी. ठीक है? So distance between these two is smaller than the distance between these two. So वही चीज है. ठीक है? कई बार हम already कर चुके हैं. Is it fine everyone? या x यहाँ पे हो जाएगा या y यहाँ पे हो जाएगा, बट बात एक ही है कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है that is smaller than the distance between these two. Is it fine? Yes. So what does this implies? This implies MFS minus MFS is an upper bound for the set fx minus fy, difference between any two images, right? अब बस इसका सुप्रीमम दिखाना है, तो उसके लिए क्या शो करना होगा? अपर बाउंड तो ऑलरेडी शो कर चुके हैं. We have to show it is the least upper bound, right? So least upper bound के लिए हमें क्या करना होगा? We will have to use epsilon property. Okay? Epsilon property कैसे होता है least upper bound for any epsilon? So let epsilon greater than 0 be. Yes. ये उसी में
सेट में ही लाई करेगा ये वैल्यू। नहीं सेट में ना भी लाई करे, ठीक है, इट मे नॉट लाई इन द सेट, बट हम एप्सिलॉन क्राइटेरिया लगाएंगे फॉर सुप्रीमम एंड इन्फीमम। एप्सिलॉन क्राइटेरिया यूज करेंगे सुप्रीमम के लिए। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, देन बाय एप्सिलॉन criteria for supremum and infimum, what will happen? Small f, ये कैपिटल M सुप्रीमम है, स्मॉल m infimum है। सो क्या होता है एप्सिलॉन क्राइटेरिया? देयर एग्जिस्ट x नॉट y नॉट बिलोंगिंग टू s such that, yes, क्या होगा? MFS is less than fx naught plus epsilon by 2 and MFS is greater than fy naught minus epsilon by 2. yes माइनस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, ये एप्सिलॉन ये हमारे उससे एप्सिलॉन क्राइटेरिया फॉर सुप्रीमम एंड इन्फीमम। अब इससे हमें ये fx नॉट और इसमें रिलेशन ले आना है और फिर अपना काम बन जाएगा। ठीक है, सो अब यहां से क्या हो गया? MFS, so then MFS minus MFS is less than, because we are replacing this by bigger number and this by smaller number, so overall it will increase, right? Minus is it fine? Which is equal to fx naught minus fy naught plus epsilon, right? So we have found a member of, we have found an element of this, इसका एक member find कर लिया हमने, इस set का एक member find कर लिया जो epsilon criteria को satisfy कर रहा है। So by epsilon criteria epsilon criteria for supremum, क्योंकि this is happening for each epsilon greater than 0, right? So by epsilon criteria for supremum, MFS minus MFS is equal to supremum of fx minus fy upon, is fine everyone? Proof सबको clear है? Yes, sir. We have repeatedly used epsilon criteria for supremum and infimum. ठीक है, now let us take the second part. What was there in the second? M of mod fs minus m of mod fs is less than equal to mfs minus mfs. Okay, so we have to prove this. In to show m of mod f over s minus m of mod f over s is less than equal to supremum of f over s minus infimum of f over s. Yes, कोई बताओ कैसे प्रूव करें इसे, क्या इनइक्वालिटी यूज करें? mod f less than equal to f, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। ठीक है, रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस, mod fx minus mod fy is equal to mod fx minus mod fy, right? Which is less than equal to mod fx minus fy, right? And this is less than equal to m of fs minus m of fx. Okay, distance between any two member is smaller than the difference between supremum and infimum. ये अभी हमने लास्ट में प्रूव करा है, लास्ट पार्ट में, राइट? Is it fine? Yes, sir. So यहाँ से क्या पता चल रहा है हमारे पास कि हर एक x y के लिए for every x y in S, mod fx minus fy is less than equal to mfs minus mfs, right? This implies for mod fx, तो वहां पे भी तो मॉड लगाएंगे ना? नहीं, ये because this is always greater than this,
दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, तो इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, फाइन। सर सुप्रीमम भी तो नेगेटिव, मतलब दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो नहीं, स्टिल दिस इज ऑलवेज बिगर देन दिस, सो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो दैट मीन्स कि ये जो बड़ा नेगेटिव है ये छोटा नेगेटिव है, सो जैसे -2 इधर -5 हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आ जाएगा तुम्हारे पास। कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, जब भी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव, चाहे आप वो नेगेटिव कर रहे हो या पॉजिटिव कर रहे हो। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो पॉजिटिव ही आता है। ओके, सो mod fx minus mod fy, this is less than equal to mfs minus mfs for all xy belonging to S. What does this imply? This is an upper bound for this, right? So this implies supremum of mod fx minus mod fy is less than equal to mfs minus mfs, right? Because this is true for all xy, so इसलिए supremum से भी छोटा हो जाए, ये this is an upper bound for this set, ठीक है? So it is smaller than this, और ये supremum क्या है last part से, this is equal to is less than equal to using previous part, क्योंकि this thing is this, right? Is it fine? Yes, sir. ये सबको क्लियर है? प्रूफ सेकंड पार्ट का भी सिंपल है, सेकंड पार्ट, बस हमें ये रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज कर ली हमने, यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर ली है, और ये तो जनरल जो है सुप्रीमम इनफिमम की प्रॉपर्टी, और ये जो है यहाँ पे हमने, क्योंकि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ये हमने पार्ट 1 से यूज कर लिया है। ठीक है, ओके, नाउ let us take the third part, which is m of f square s minus m f square s is less than equal to 2k times this, right? Where k is the bound of f. Third, to show m of f square over s minus infimum of f square over s is less than equal to 2k times ms fs minus mfs. Fine. So again, क्या करना चाहिए हमें? Same thing, we will start with this, right? F square x minus f square y. So for any xy belonging to S, f square x minus f square y. Okay, so this is equal to fx whole square minus fy whole square. अब यहाँ पे a square minus b square का फॉर्मूला लगा देंगे, so we will get fx minus fy, और इधर fx plus fy, right? Which is less than equal to इधर मॉड ले लो, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक मॉड, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉड की यूज, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज करेंगे, सो मॉड लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या नहीं तो इधर मॉड मत लो, इधर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वी कैन टेक इन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई, मॉड एफ एक्स प्लस एफ वाई, राइट? फाइन, क्योंकि यहाँ दिस टर्म इज स्मॉलर देन इट्स मॉड, राइट? या एक स्टेप और इंक्लूड कर लो। ठीक है,
which is less than equal to mod fx square minus fy square. Fine. So this is less than equal to this. अब ये mod use कर लिया यहाँ पे. Now we can use the triangle inequality. So this will become, this is smaller than mfs minus mfs, right? And this is smaller than mod fx plus mod fy using triangle inequality और ये वाला result. And this is less than equal to ये 2k हो जाएगा. Is it fine? And now this is true for all xy belonging to S. So it follows that supremum of f square x minus f square y xy belonging to S is less than equal to 2k times mfs minus mfs. And this is, what is this? So from part A, from part 1, we have m of f square s minus m of f square s is less than equal to 2k times mfs. Is it fine? Clear, everyone? Yes. कहीं भी किसी को कुछ समझना है पूछ लो. बस बेसिक इनइक्वालिटीज यूज कर रहे हैं. अभी तक हमने कोई भी ऐसा कुछ मैथमेटिक्स यूज नहीं करा है. बस तुम्हारा फर्स्ट ईयर का जो सुप्रीमम इन्फीमम है वही यूज कर रहे हैं. और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सुप्रीमम इन्फीमम, बेसिक मैथमेटिक्स. ठीक है. So let us take the fourth part. अच्छा, इसमें तो है ही fourth. There were only 3 parts, right? So we have proved all these 3 inequalities. ठीक है. So ये वाली इनइक्वालिटी, इसको तो, इसका तो यूज हमने इन दोनों को प्रूव करने के लिए करा है. और इन दोनों को यूज करेंगे टू प्रूव दैट f square is integrable and mod f is integrable. ओके. फर्स्ट के यूज से हमने ये प्रूव करा है और ये दोनों, और फिर इन दोनों के यूज से वी विल प्रूव दैट mod f is integrable and f square is integrable. ठीक है एवरीवन. So this completes the proof of the lemma. Now before proceeding further, we will prove another result. So first we will prove that square of an integrable function is integrable. कर लिया था last time हमने. Yes. चलो कर लेते हैं. कोई Yes. सर कर लिया. कर लिया था. प्रूफ भी ना. चलो फिर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं. ओके. Integration preserves order. So if f and g are two integrable functions such that mod fx, so fx is less than equal to gx for every x in AB, then integral of f will be smaller than integral of g. Okay. इसी थ्योरम को कई बुक्स में इस तरह से भी देते हैं. fx is greater than equal to 0, then abf is greater than equal to 0. ठीक है. बात एक ही है क्योंकि gx minus fx is greater than equal to 0, so abg minus f is greater than equal to 0, so this will imply g is greater than equal to f. इसके लिए लेकिन अभी हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे कि एडिटिव होता है, स्प्लिट कर सकते हैं, वो अभी करेंगे हम. ठीक है. नहीं कर चुके, ऑलरेडी कर चुके. सम ऑफ टू इंटीग्रल फंक्शंस तो कर चुके ना. ए बी, अगर दो इंटीग्रल फंक्शंस हैं एफ एंड जी, तो ए बी एफ प्लस जी इज इक्वल टू ए बी एफ प्लस ए बी जी. ये ऑलरेडी कर चुके हैं और स्केलर भी कर चुके हैं. सी एफ इज इक्वल टू सी टाइम्स ए बी एफ. ठीक है. सो माइनस एफ इज स्केलर, इट इज -1 into f, राइट. तो ये रिजल्ट इससे आ जाएगा. ये दोनों कर चुके हैं. सो वी कैन राइट लाइक दिस. ठीक है. इज इट फाइन? यस. सो कई बुक्स में इसको इस तरह से भी प्रूव करते हैं. पहले ये रिजल्ट प्रूव करते हैं एंड देन दे प्रूव दैट fx minus gx लेके this is greater than equal to 0, so this implies ab f minus g is greater than equal to 0. This implies, this is because this is nothing but f plus -1 into g, right? So this is ab f
plus minus 1 into ABG, so which is equal to ABF minus ABG, which is greater than equal to 0. तो इससे ये आ जाता है, ठीक है. So कई बुक्स में ये प्रूव करके फिर ये प्रूव करते हैं, और we can directly also prove it. So integration preserves order. If f and g are integral functions such that fx is less than equal to gx for all x belonging to ab, then integral of abf is less than equal to integral of abg, right? Okay, so how to prove this? Yes. अपर और लोअर सम से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसी तरह से डेफिनेशन करी हुई है. fx को करेंगे hx मान लेंगे. यस, हम नहीं माइनस नहीं करेंगे, वो अभी तो वो नहीं कर सकते ना. अभी हमें क्या करना होगा, वी विल टेक एनी आर्बिट्री पार्टीशन, उससे करना होगा हमें, ठीक है. लेट p इक्वल टू a इक्वल टू x नॉट लेस देन x1 लेस देन xn इक्वल टू b any पार्टीशन ऑफ ab, ठीक है. ii is xi minus 1 to xi, delta I is xi minus 1, mi f का ले लेते हैं सुप्रीमम, ठीक है. m of f over ii, small mi, m of f over ii, mi star, m of g over ii, mi star, m of g over ii, right? Since fx is less than equal to gx for all x belonging to ab, so what will be the relation between supremum? The supremum of fx less than equal to infimum of gx. Mi star, mi is less than equal to mi star for all I equal to 1 to n, right? Is defined. Yes, is it fine? Yes, sir. So this implies UFP is less than equal to UGP, right? क्योंकि UFP क्या है? It is mi delta is summation of this, so यही आ जाएगा, ठीक है. एक स्टेप, दो स्टेप और डाल सकते हो बीच में, डायरेक्ट लिख सकते हो वैसे यहाँ पे. Otherwise what you can do, you can write like this. So this implies mi delta I is less than equal to mi star delta I, and this implies summation mi delta I is less than equal to summation mi star delta I. So UFP is less than equal to UGP, right? But directly लिख दो, अब तो इतना हमने कर लिया है कि we know, ठीक है. So यहाँ पे now we can directly write this, ठीक है. Is it fine, everyone? Yes, sir. So this implies limit norm p tends to 0, UFP is less than equal to limit norm p tends to 0, UGP, right? And what is this? This is UF, this is UG, and because since f and g are UG. integrable, so this implies integral ABF is less than equal to integral ABG, since f and g are integrable. So in UF is equal to this. So ABF is equal to UF and ABG is equal to UG. Hence, is it fine सबको? So हमने कुछ ज्यादा यूज नहीं करा, हमने बस यही यूज करा है कि mi is less than equal to mi star, so उस पे UF पे चले गए. UF से फिर हमने लिमिट ले ली because this is true for all partition and because P is any arbitrary partition, right? So we can take the limit
दिस इज ट्रू फॉर ऑल पार्टीशन। सो ये हो गया, और फिर यहाँ पे लिमिट ले लिया, और लिमिट लेके हमने ये कर लिया फॉर ऑल पार्टीशन P of AB, राइट, बिकॉज P इज एनी पार्टीशन ऑफ AB, और उससे फिर लिमिट ले सकते हैं हम, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हम लोग एल पे वर्क नहीं करेंगे इसमें, क्या नहीं करेंगे? तो लोअर उस पे लोअर जरूरी लिमिट नहीं पे है ना, वर्क नहीं करेंगे। इंटीग्रेबल है तो अपर सम और लोअर सम बराबर है, तो UF इसके बराबर हो गया, लोअर सम करने की जरूरत क्या है? ठीक है, बाकी ओके लोअर सम से भी काम कर सकते थे। ठीक है, सेम काम हम लोअर सम से कर सकते थे, लेकिन एक ही से करना पड़ेगा काम, दो से करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये दोनों ये तीन ये इंटीग्रेबल है तो ये सबके ही बराबर है ना। F और G इंटीग्रेबल गिवन है हमें, so this is equal to UF equal to LF। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, राइट। सो हमें तो इसी यस एक का सर, यूज आ गया। करके एक का यूज करके आ रहा है, हमें दूसरे की यूज करने की जरूरत नहीं है लोअर सम की। ठीक है, यहाँ से बता, बल्कि हटा भी सकते हो, इसकी जरूरत भी नहीं है सेकंड वाले की, ये रिक्वायर्ड भी नहीं है लिखना। ठीक है, लिख दो, लिखना हो तो लिख दो, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, बस लिखा तो मैंने इसलिए था कि यूनिफॉर्म रहे, कि ये हमेशा लिखना ही है, कि गलती से मिस ना करो इस चीज को। ठीक है, क्योंकि MI जो है ये बुक की नोटेशन नहीं है, दिस इज द नोटेशन दैट वी आर यूजिंग, सो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, बुक की नोटेशन ये है। ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम के लिए बुक की नोटेशन ये है। सो इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, बट आई फाइंड इसको लिखना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ता है हमें, तो इसलिए बस ये मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमेशा ये नोटेशन। अच्छा, इसकी कोरोलरी है, कोरोलरी so if f is an integrable function of over AB, if f is an integrable function over AB such that fx is greater than or equal to 0 for all x belonging to AB, then integral of ABF is greater than or equal to 0। अगर पॉजिटिव फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव इंटीग्रल, बेसिकली इट इज दिस। सो हाउ यू विल प्रूव दिस? Yes, how you will prove this? फिर ऊपर वाले फंक्शन से g को कांस्टेंट फंक्शन ले लेंगे जो कि 0 के इक्वल। Let gx equal to 0 for all x belonging to AB, then fx is greater than or equal to gx for all x belonging to AB, right? So by previous theorem, so since integration preserves order, so integral of ABF is greater than or equal to integral of G। Now since constant function का हमने already prove करा हुआ इंटीग्रल क्या होता है? Now since gx equal to 0 for all x belonging to AB is a constant function, yes, हमने इसका इंटीग्रल प्रूव करा हुआ है, it is so integral of ABG is equal to 0 times BC times P minus A आता है ना, remember, अगर gx equal to C है तो so which is equal to 0। ठीक है, from star and double star ABF is greater than equal to, ठीक है। और कई बुक्स में इसको प्रूव करके एंड देन दे प्रूव द दिस रिजल्ट एज कोरोलरी। ठीक है, कई बुक्स में इसको प्रूव करके एंड देन दे प्रूव दिस रिजल्ट एज कोरोलरी। ठीक है,
कुछ भी दोनों में से कोई भी एक अप्रोच ले सकते हो। ओके, so next we are going to prove this theorem. If f is integrable function on AB, then mod f is integrable on AB, and integral of AB f is less than equal to integral of mod f. ठीक है, so basically that is, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, minus AB mod f is less than equal to ABF is less than equal to AB mod f, right? Mod of x is less than equal to a का मतलब क्या है कि minus a is less than equal to x less than equal to a, remember? So इसलिए हमें basically we will have to prove this, ठीक है, we will have to prove this, और इसके लिए inequality यूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट we will have to prove mod f is integrable, फिर तो ये आसानी से हो जाएगा। Claim 1 given is f is integrable over AB. Claim 1 mod f is integrable over AB. So उसके लिए we will, अब क्या करना होगा, हमें एप्सिलॉन पार्टीशन क्राइटेरिया से काम करना होगा। So let epsilon greater than 0 be any real number. So since f is integrable over AB, so by epsilon partition criteria for integrability, what will happen? There exists a partition P of AB such that, yes, UFP minus LFP is less than epsilon, right? Is it fine? Yes, sir. Okay. Let P equal to A equal to x naught less than x1 less than x2 less than xn equal to P. II is xi minus 1 to xi. Delta I is xi minus 1. Mi is mf over ii. Small mi is small, right? And mi star is m mod f over ii. Mi star is m mod f over ii. Now what is the relation between mi star and this? Then from lemma part 2 क्या आएगा हमारे पास part 2 से? Yes, yes, part 2 देखो, उसमें अभी हमने प्रूव करा है m of f over s minus m of e. So this is your mi is small mi, mi star, small mi star is less than equal to mi minus mi, right? Yes. Yes, sir. Now we can multiply for all I equal to 1 to n. So आप delta I से multiply कर दोगे इसे, क्योंकि delta I positive है, so it will preserve the inequality, ठीक है, for all I equal to 1 to n. और क्योंकि सब सारे छोटे को ऐड करोगे और सारे बड़े को ऐड करोगे तो inequality preserve रहेगी. So summation I equal to 1 to n
mi star minus mi star delta I is less than equal to summation I equal to 1 to n mi minus mi delta I, right? And this is your UFP minus LFP, which is less than equal to UFP minus LFP, which is less than epsilon using A, right? So अब हमारे पास एक epsilon के लिए एक partition मिल गया, so that UFP minus LFP, U of mod FP minus L of mod FP is less than epsilon. So by epsilon partition criteria, mod F is integrable over AB, right? और इससे क्या imply होता है? Consequently, minus mod F is also integrable because scalar multiple of a integrable function is integrable, since scalar multiple of an integrable function is integrable. ठीक है, सो हमारे पास mod f पे इंटीग्रेबल है, माइनस mod f पे इंटीग्रेबल है. Claim 2 minus ab mod f is less than equal to abf is less than equal to ab mod f, right? So इसके लिए क्या करेंगे यूज? Now we know that yes, कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे इसके लिए? Minus mod fx is less than equal to fx is less than equal to mod fx, right? Is it right? ये इनइक्वालिटी पता है सबको? Yes. Yes, sir. So this implies minus mod fx is less than equal to fx is less than equal to mod fx for all x belonging to AB. Now since integration preserves order, so what will happen? Integral AB minus mod f is less than equal to integral ABF is less than equal to integral mod f. अब क्योंकि स्केलर बाहर निकाल सकते हैं, हमने ऑलरेडी कर रखा है ये रिजल्ट, सो इंटीग्रल AB mod f is less than equal to ABF is less than equal to AB mod f, and this implies mod is less than equal to ABF. Hence proved. ठीक है, सो ये रिजल्ट कई जगह यूज करेंगे हम. Is it fine everyone? Yes. Of AB mod f is less than equal to AB mod f. ठीक है, अब अभी हमने करा f is integrable implies mod f is integrable. Is the converse true? अगर mod f integrable है तो f integrable होगा? बताओ. If mod f is integrable then over AB, then can we conclude that f is integrable over AB? Yes, can someone give an example? Oh, prove it or give an example for this. बताओ. Yes, if mod f is integrable over AB, then can we conclude that f is integrable over AB? Yes. No, not necessarily. अब कोई एग्जांपल बताओ.
नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन का जिसका मॉड एफ इंटीग्रेबल हो। नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन करे कौन कौन से हमने? डिरिचलेट टाइप। यस, डिरिचलेट टाइप। अब डिरिचलेट टाइप का ऐसा मॉड फंक्शन बताओ जो इंटीग्रेबल हो जाए। सर वो एक्स और माइनस एक्स, रिलेशनल। यस, एक्स और माइनस एक्स की जगह ये ले लो, 1 और -1। ठीक है, तो मॉड लोगे तो दोनों 1 हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, इज इट फाइन? to consider the function fx equal to 1 if x belongs to q f from 0 1 to r। कहीं से भी डिफाइन कर सकते हो, बस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल लेना है हमें। and -1 if x belongs to q complement intersection। ठीक है, then we know that प्रूव भी कर सकते हैं उससे f is not integrable over 0 1, राइट? क्योंकि इसका LF क्या आएगा? यस, सिंस LF क्या आएगा इसका? लोअर इंटीग्रल। इसको कई बुक्स में इस तरह ये हम ये भी डिनोट करते हैं। यस, क्या आना चाहिए इसका बताओ, मैंने बताया था कैसे पता करते हैं। -1। यस, -1 a c टाइम्स b माइनस a। b माइनस a यहाँ पे क्या है? 1 - 0, राइट? सो इट मींस ये which is -1। ठीक है, एंड अपर इंटीग्रल इज 1। it is 1 1 - 0 which is 1। ठीक है, so LF equal to this, UF equal to, so LF is not equal to UF। ठीक है, ये प्रूव ये कर भी सकते हो, एग्जाम में ऐसे ही 1 मार्क में आ जाते हैं ये क्वेश्चन इस तरह के। अगर ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट यहाँ से देख के बता सकते हो कि LF क्या आएगा, UF क्या आएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीमम हमेशा इससे आएगा, इन्फीमम हमेशा इससे आएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो तुम्हारे पास LF आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो तो यू विल गेट सुप्रीमम। ठीक है, बट mod f x is equal to 1 for all x belonging to 0 1, so that is mod f is constant function and hence integrable over 0 1। फाइन एवरीवन? सो अगर f इंटीग्रेबल है तो mod f इंटीग्रेबल होता है, बट अगर mod f इंटीग्रेबल है तो f नीड नॉट बी इंटीग्रेबल, राइट? Is it fine? Yes, sir. अब next result that we are going to prove is that reciprocal of a bounded integral function is integrable provided उस वो जो है उसका जो mod है that is never 0। ठीक है, so reciprocal of an integrable function is integrable। So if f is bounded and integrable on AB and there exists lambda greater than 0 such that mod fx is greater than equal to lambda for all x belonging to AB, then 1 by f is integrable over AB। That means कि infimum of mod f is greater than 0। ठीक है, is positive। ठीक है, अगर ये है इस तरह का कोई फंक्शन है बाउंडेड फंक्शन विच इज इंटीग्रेबल जिसका mod f जो है उसका infimum पॉजिटिव है, तो देन okay, then such a function is integrable। so इसको प्रूव करना होगा हमें। so again we will have to prove using epsilon partition criteria। so given f is integrable over
AB, right? To show 1 by f is integrable over AB। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, इसके बिना नहीं, इसके बिना फेल हो जाएगा, चाहे हमेशा पॉजिटिव भी रहे बट स्टिल इट विल फेल इफ दिस डज नॉट होल्ड। ठीक है, इन्फीमम अगर 0 हो गया फंक्शन का मॉड f का, तो उसका मतलब है कि इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, इफ द infimum of the function is 0 then the function is not integrable. So 1 by f is integrable over AB. So proof, so let epsilon greater than 0 be any real number. So we start with any arbitrary epsilon greater than 0. So again by epsilon part, since f is integrable over AB, so by epsilon partition criteria for integrability, what will happen? There exists a partition P of AB with UFP minus LFP less than lambda square epsilon। ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी देखेंगे हम क्यों ले रहे हैं हम इस तरह का। ठीक है, इज इट फाइन? Is it fine everyone? Yes, sir. So again let P equal to A equal to x naught less than x1 less than xn equal to B, II equal to xi minus 1 to xi, delta I equal to xi minus 1, mi equal to m of f over II, small mi equal to m of f over II, mi star equal to m of 1 by f over II, mi star is equal to m of 1 by f over II। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, mi star माइनस mi स्टार और mi माइनस mi के बीच में वी हैव टू स्टैब्लिश सम रिलेशन। सो कंसीडर क्या करेंगे, फॉर एनी xy इन द ith इंटरवल, फॉर एनी xy belonging to II, yes, what we will do, we will start with 1 by fx minus 1 by fy. So this is nothing but 1 by fx minus 1 by fy, right? So which is less than equal to 1 by fx minus 1 by fy, which is equal to fx minus fy upon mod fx mod fy, right? So which is less than equal to, ऊपर वाले को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यस, mi माइनस mi और नीचे वाले को lambda, since mod fx is greater than equal to lambda for all x belonging to AB, so नीचे को हम डिनोमिनेटर को we are decreasing and न्यूमरेटर को we are increasing, so overall the number will increase, right? For all xy belonging to II, ठीक है, so this is there, so यहाँ से क्या आ गया, it is equal to 1 by lambda square mi minus mi, so since this is true for all xy belonging to, this is true for all xy belonging to s, so इससे क्या imply होता है, so this implies supremum of 1 by fx minus 1 by fy xy belonging to s is less than equal to 1 by lambda square mi minus mi. So this implies from part A of lemma, part 1 of lemma, यहाँ से क्या आ जाएगा, mi star, because this is supremum minus infimum, right?
So अब now we can multiply it by delta. अब तो सेम चीज हो गई है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार, because we are multiplying by something positive, so inequality will not reverse. And now then we can add all these things, right? So summation I equal to 1 to n mi star minus mi star delta I is less than equal to 1 by lambda square summation I equal to 1 to n mi minus mi delta I, right? And this is your u1 by fp minus l1 by fp u minus l1 by fp is less than equal to lambda square times ufp minus lfp, sorry 1 by lambda. So which is less than epsilon using a, because this was less than lambda square epsilon. Okay. So hence by epsilon partition criteria for integrability 1 by f is integrable over Is it fine, everyone? So reciprocal of an integrable function is integrable. Okay? Is it fine? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ठीक है अब एक छोटा सा रिजल्ट है उसको मैं करा देता हूँ फिर देन वी विल फिनिश इट हियर. इसके लिए ऑलरेडी जो हमने रिजल्ट्स प्रूव करे हुए उसको यूज कर लेंगे. सो वी हैव टू प्रूव दैट इफ f and g are two integral function, if f and g are two integral function, then product of two integral function is integrable, maximum of two integral function is integrable, and minimum of two integral function is integrable. So इसको हम sum of functions के terms में represent कर सकते हैं इनको. So your fg is f plus g whole square minus f minus g whole square, right? और क्या आएगा यहाँ पे साथ में? इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? यस, ये करा हुआ ये सब हमने पहले भी कई बार जब हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी थी. मैक्सिमम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, या तो मैक्सिमम क्या होता है? 1/2 mod f plus g minus plus f minus g mod f minus g, राइट? और मिनिमम क्या हो जाता है? वन बाई टू एफ प्लस जी माइनस mod f minus g. ठीक है. सो बाय अलजेब्रा देन सिंस, ठीक है, f so by algebra of integrable, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया सम ऑफ टू इंटीग्रल फंक्शन इज इंटीग्रेबल, सो f plus g इंटीग्रेबल हो जाएगा. फिर हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया स्क्वायर ऑफ एन इंटीग्रल फंक्शन इज इंटीग्रेबल, सो ये इंटीग्रेबल हो गया. Similarly this is integrable and their difference is integrable, or scalar multiple is integrable. So by algebra we can say similarly हमने mod भी प्रूव कर लिया इंटीग्रेबल. So this is combination of all those things. So by algebra of integrable functions, fg, maximum of fg and minimum of fg are integrable over E. ठीक है, is it fine? ठीक है, because we have already proved all these things. स्क्वायर प्रूव कर चुके हैं,
डिफरेंस तो उसी का ही हो गया, स्केलर मल्टीपल और प्लस का कॉम्बिनेशन. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन. सो वी कैन सिंपली राइट बाय अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस, these are integral functions. ठीक है. So this much is enough for today. Any questions anyone want to ask? सर वो थ्योरम को प्रूव करने में वो एस सेट जो लेट करते हैं सर, उसे एक्सप्लेन भी करना होगा सर. वो एस सेट क्या है? S तो any set है ना, S is any arbitrary set. कह रहे हो ना MFS, इसके लिए कह रहे हो ना. दिस इज एनी सेट, एनी सेट. ठीक है. ये पूरा ये जो लेमा जो हम प्रूव कर रहे हैं दैट इज फॉर एनी आर्बिट्री सेट, राइट. इफ यू सी दिस फॉर एनी सबसेट S. सो ये S के लिए है. तो XY जो है हम S में से पिक कर रहे हैं ना, तो अपने आप ही हो गया S को. अब जहाँ पे ये जनरल के लिए इसलिए कराया क्योंकि II के लिए बार बार यूज कर रहे हैं, तो हर एक II के लिए ट्रू हो गया क्योंकि हमने जनरल के लिए प्रूव कर रखा है S के लिए. ठीक है. प्रूफ फॉर एनी आर्बिट्री सबसेट. सो ये कुछ भी हो सकता है, इंटरवल ना भी हो, ये दिस कैन बी एनी सेट, बट क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम की प्रॉपर्टी है ओवर अ सेट, सो ये होल्ड करता है. ठीक है. यस सर. यस. ओके. सो और किसी को कुछ पूछना है? ओके. सो एज देयर आर नो क्वेश्चंस, आई एम एंडिंग दिस क्लास. बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे. Thank you for watching this video. To stay updated, please subscribe to our YouTube channel, Cosmos Learning. Happy learning through Cosmos Learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.